ನಮಸ್ತೆ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಫಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತಪ್ಪಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ಈ ಥರ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ প্লিজ কমেন্টে হেরি। নমস্তে। বিটরুট নাম শুনলেই আগে যেন আমার গায়ে জ্বর চলে আসতো, কিন্তু আজকাল আর আসে না। আজকাল খুব তৃপ্তি করেই সেটাকে খাই। ওই যে কথায় বলে না, আগে মা বানিয়ে দিত, দেখলে খুবই রাগ হতো, কিন্তু এখন যেখানে আছি সেখানে যেন সব কিছুই অমৃতের মতো লাগে। তো যাই হোক, কেন ভালো লাগছে সেটাই বলছি। একদিন অফিসে একজন বিটটাকে একটা অন্যরকমভাবে রান্না করে এনেছিল। সেটা অবশ্যই পরোটার সাথে খেয়েছিলাম, আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। তো তারপর থেকেই আমার এটা ভালো লাগে। তো নমস্কার বন্ধুরা, গল্প কথা এবং রান্নার আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। হ্যাঁ, এই ভিডিওতে আমি এখানকার একটু লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজও ব্যবহার করেছি। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটা, কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। নমস্কার।